Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स टू डीसी सर्किट्स ए विषय रे पढिबा ऑलरेडी हमें नेटवर्क थ्योरम्स जो पढिला राइट फ्रॉम द सुपरपोजिशन थ्योरम देन थेवेनिन्स थ्योरम रेसिप्रोसिटी थ्योरम नॉर्टन्स थ्योरम देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सो ए सब थ्योरम जनरली हमें देखिला एसी सर्किट पाई सो सेम थ्योरम डीसी सर्किट पाई मध्य एप्लीकेबल तो फर्स्ट जदि हमें देखिबा गोटे आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट सोर्सेस पाई ओके सो याको हमें बुझिबा इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स ओके देखो एटी फर्स्ट एग्जांपल गोटे दउची ओके गोटे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एठी देइची ताकू कन्वर्ट करबा को कहिची इनटू इट्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट करंट सोर्स ओके सो देखो एठी फर्स्ट स्टेप हमें कोन करबा एठी गोटे शॉर्ट करबा शॉर्ट अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी ओके ए बी जो ए टर्मिनल को हमें शॉर्ट कर देबा ओके एंड फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट सो एठी देखो शॉर्ट सर्किट करंट माने दिस इज द वोल्टेज divided by the resistance so 20 by 10 equivalent to your 2 ampere okay thus equivalent current हमें पाइगला सोर्स रो okay आयर constant current पाइगला which is 2 ampere second step कोन करबा we remove this short from the terminals A and B so that now they are open again okay तापर third step रे remove करबा source आउ replace कर देबा by its internal resistance which in the present case is actually 0 okay ताले ये गला थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप रे देखो we will measure the resistance across the terminals A and B with a load which is removed okay so no load is connected across A and B in the present case okay thus resistance जो एबे आसिला at the terminals A and B will be now how much 10 ohm जोटा आगु स्टार्टिंग रु थिला so equivalent current source is a source of 2 ampere constant current having a 10 ohm resistance in parallel with it okay तापरे तार उल्टा डाबे देखियो convert constant current source into the equivalent voltage source okay so एठी भी सेही बळिया देखो एठी गोटे सर्किट हमको देइछि ओके सो अगेन स्टेप 1 रे कोन करबा वोल्टेज जो अछि सोर्स रो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द करंट of the current source by the internal resistance so the voltage is IR so देखो एटी 8 मिलिएम्पियर करंट अछि 3 किलो ओम रो रेजिस्टेंस अछि ओके मिलिएम्पियर माने 10 टू द पावर -3 एम्पियर किलो ओम माने 10 टू द पावर 3 ओम ओके कन्वर्ट करला परे हमें पाउछु 24 वोल्ट व्हिच इज द वोल्टेज सोर्स रो वोल्टेज जोटा ओके तापरे स्टेप 2 एठी कहूची इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स एटा केते हबो 3 किलो ओम ओके सो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इज अ सोर्स ऑफ 24 वोल्ट हैविंग अ सीरीज इन रेजिस्टेंस विथ द 3 किलो ओम ओके सो एटा 3 किलो ओम जोटा हमें पाइला ओके इंटरनल रेजिस्टेंस ता सेटा ही सीरीज रे अछि ए वोल्टेज सोर्स सहित व्हिच इज 24 वोल्ट ओके तापरे एप्लीकेशन देखिबा एबे सुपरपोजिशन थ्योरम पाई ओके सो देखो एठी गोटे सर्किट दे दी छी पचारची फाइंड द करंट I in the circuit given below using the superposition theorem okay so देखो it is very simple first हमें कोन करिबा वोल्टेज सोर्स जो अछि ताकू एलोन कंसीडर करिबा ओके एंड सर्किट को एबे रिड्यूस कर देला हमें as shown in this figure with the current source to be in the open circuited ताले ए जो करंट I1 its value will be 0.8 ampere
तापर सेकेंड स्टेप रे कौन करवा यही 2 एम्पियर करंट सोर्स जोटा अच्छी सर्किट राइट साइड रे ओके ताकू एबे एलोन कंसीडर करवा बाय शॉर्ट सर्किटिंग द वोल्टेज सोर्स ओके सो वी आर गेटिंग द सेकेंड फिगर नाउ ओके सो दिस इज द सेकेंड फिगर विथ द 2 एम्पियर करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स को देखो ये आम शॉर्ट सर्किट कर दीचु ओके ताले करंट फ्लोइंग थ्रू द 30 ओम रेजिस्टर माने एटा ओके जो करंट एठी फ्लो करछि व्हिच इज I2 this will be how much this will be equal to 2 into 20 divided by 20 plus 30 केमती एटा आसिला ए जो 2 मल्टीप्लाई होउछि माने एटा होउछि ए 2 एम्पियर 2 ओके दिस इज करंट तापरे एठी करंट डिवीजन फार्मूला हमें यूज करछु एक्चुअली ओके देखो एटा होउछि 20 ओम जोटा एठी न्यूमरेटर रे लिखा हैला तापरे ए 20 ओम एक्चुअली इट इज इन सीरीज with this 30 ohm जोटा कि एठी डिनोमिनेटर रे लिखा हैला सो वी आर गेटिंग द करंट एज 0.8 एम्पियर ओके ताले एबे हमें अप्लाई करि परिबा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन I equal to I1 plus I2 so that we are getting total current 1.6 ampere. Next problem, find the branch currents in the following circuits. देखो यही सर्किट रे दुई साइड रे वोल्टेज सोर्स दीची सो गोटे को आमे कंसीडर करबा गोटे को आमे स्किप कर देबा ओके सो फर्स्ट आमे कोन करबा 84 वोल्ट जोटा एठी दीची ताकू आमे कंसीडर करबा रिप्लेस कर देबा 21 वोल्ट बैटरी बाय इट्स internal resistance which is obviously 0 here okay then circuit be reduce he jibo as shown in the figure okay so देखो एबे हमें एक वेरियस ब्रांच करंट्स को रेस्पेक्टिवली डैश बा प्राइम सिंबल रे यूज करबा इंडिकेट करबा ओके ताले एबे यार रेजिस्टेंस जदि हमें बार करबा गोटे आर्म अछि देखो बी पॉइंट आउ डी पॉइंट भितरे रेजिस्टेंस this will be how much a दुई रेजिस्टेंस रो पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 ओम और 3 ओम सो रेजिस्टेंस इज 2 ओम ताले टोटल रेजिस्टेंस एबे केते हे गेला दिस 12 ओम प्लस ए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ओके सो 12 plus 2 equal to 14 ओम राइट ताले एबे करंट I1 डैश इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस सो 6 एम्पियर आसी गेला ओके सिमिलरली at the point B this current will be now divided into two parts in the inverse ratio of the resistance of two parallel paths okay that is in the ratio 3:6 okay resistance जानी की ताले I dash हमें पाउचु 2 ampere I2 dash ही जब केते 4 ampere काहे की because 3:6 अछि that is 1:2 तेणु करी I dash is to I2 dash will be how much that is again 1:2 okay now next considering the 21 volt battery जोटा राइट साइड रे थिला ओके आ 84 volt बैटरी को हमें रिप्लेस कर देबा बाय इट्स शॉर्ट सर्किट विथ अ जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस ताले एई भलिया पुनी अगेन सर्किट आसी गला अगेन वी डू द सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन एठी एबे RBT रो वैल्यू 4 ओम आसिला देन टोटल रेजिस्टेंस देन I2 double dash which is found out to be 3 ampere okay now this current will be divided at the point B in the inverse ratio of resistances of two parallel paths okay ताले I1 double dash आउ I double dash हमें पाई गला okay next हला अबे हमें सुपरपोजिशन थ्योरम एबे अप्लाई करि परिबा okay कंबाइन करिबा ए दुईटा जाक रिजल्ट को so I1 will be equal to I1 dash minus I1 double dash equal to 5 ampere I2 equal to I2 double dash minus I2 dash equal to minus 1 एम्पियर एटा डायरेक्शन जानी कि यार माइनस पड़िबो ना प्लस पड़िबो ओके सेटा देखिबा को हबो देन फाइनली द टोटल करंट I equal to I dash plus I double dash which is equal to 4 ampere okay next problem हला using the superposition theorem find the voltage across R2 okay R2 माने 8 जो रेजिस्टेंस टा मझिरे अछि in the circuit okay so for this again we consider V1 only ओके एंड V2 को हमें रिप्लेस कर देबा बाय शॉर्ट सर्किट ओके सेम जिंस करा होची हला तापरे एठी यार जो रिप्लेसमेंट सर्किट ता देखो एठी फिगर 8.23 ओके दिस वन ओके सो देखो
एई दुई पॉइंट बी आउ ई भितर आम रेजिस्टेंस बाहर करवा जमी ऊपर प्रॉब्लम रे करथिला ठीक सही वे रे ही जिबार अछि ओके सो आई एम लीविंग दिस टू यू एज ए टास्क ओके अच्छा सुपरपोजिशन थ्योरम रो आम एप्लीकेशन देखि सारला एबे देखिबा थेवेनिन्स थ्योरम रो एप्लीकेशन देखो एठी फर्स्ट प्रॉब्लम रे हमको करंट पचारची in the 10 ohm resistor okay this one which is nothing but the load resistance here okay so याको आमे बाहर करिबा by using the Thevenin's theorem देखो आमे जानिछु जे Thevenin's voltage बा एटा होची गोटे ओपन सर्किट voltage which is found out after the disconnection of the load so ये 10 ohm load को आमे फर्स्ट डिस्कनेक्ट करिबा ताले देखो एबे सर्किट टा रिड्यूस करिगला आउ एई जो आर्म रे आमे लोड को डिस्कनेक्ट कर देइछु हियर वी आर गेटिंग द थेवेनिन वोल्टेज VTH ओके सो एबे एई थेवेनिन वोल्टेज रो वैल्यू आमे इजीली पाई परिबा व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एई करंट हे गला वोल्टेज डिवाइडेड बाय एई रेजिस्टेंस जोटा कि सीरीज रे अछि 5 + 5 ओके दिस इज द करंट इनटू 5 सो दिस इज द थेवेनिन वोल्टेज अच्छा तापरे हमर काम हला थेवेनिन रेजिस्टेंस बाहर करिबा व्हिच इज फाउंड आउट बाय रिमूविंग द लोड एंड शॉर्ट सर्किटिंग द वोल्टेज सोर्स एबे आमे वोल्टेज सोर्स को भी हटे नेला ओके ताले केवल दुईटा रेजिस्टेंस रहिला व्हिच आर वेरी इंपोर्टेंट दे आर नाउ नॉट इन सीरीज रादर दे आर इन पैरेलल बिकॉज किछि भी एबे आउ करंट किंबा वोल्टेज सोर्स नाही देयर इज नो सोर्स तेणु करी याको आमे पैरेलल कंसीडर करिबा so Thevenin resistance will be the parallel combination of 5 and 5 ohm so 2.5 ohm yaro value asila okay now we can apply the Thevenin's theorem h per which the circuit can be replaced by the equivalent circuit as shown in the figure having 5 volt your voltage source then 2.5 ohm Thevenin resistance okay and 10 ohm load so ये जो करंट जोटा हमको पचारथिला क्वेश्चन रे IL through the load resistance 10 ohm is given by 5 divided by 2.5 plus 10 so यार वैल्यू आसिला 0.5 ampere okay next problem show the Thevenin equivalent circuit of the following circuit okay यार हमको Thevenin equivalent circuit बाहर करिवार अछि this is very easy already हमें करिछु okay so देखो एठी 50 किलो ओम जो दुईटा रेजिस्टेंस अछि this and this obviously they are in parallel okay with each other so their equivalent resistance will be how much 25 kilo ohm okay and this will be in series with the 20 kilo ohm source current ताले एबे आमे बाहर करि परिबा देखो source current हे गला केते I equal to 50 divided by 20 plus 25 okay so यार वैल्यू आसिला 10 by 9 milli ampere so the Thevenin voltage एबे ए करंट सहित हमें 25 ओम सॉरी 25 किलो ओम को मल्टीप्लाई कर दबा सो यार वैल्यू आसी गला 27.78 वोल्ट ओके तापरे हमर काम हला शॉर्ट सर्किटिंग करिवार अछि वोल्टेज सोर्स को ओके सो एबे ए जो सर्किट टा देखो फर्स्ट हमें देखिया को पाउथला जो सर्किट रो रिडक्शन एठी ए बळे आसीबो ओके बिकॉज हमें वोल्टेज सोर्स को भी एठी हटे नेला okay so on short circuiting the voltage source we are getting the circuit like this and the 20 kilo ohm and 25 kilo ohm okay a resistance they are now in parallel tenu equivalent ebe ame jodi bahar kariba this equivalent of these two resistance will be in series with the 5 kilo ohm resistance okay so Thevenin resistance ame pai pariba okay like this यार वैल्यू आसीगला 16.11 kilo ohm so at the end we can apply the Thevenin's theorem into the Thevenin's equivalent circuit जो थी कि हमें ए वोल्टेज आउ ए रेजिस्टेंस दिस इज द Thevenin voltage and Thevenin resistance पाइछु okay so this is the equivalent circuit okay next let us have some problem based on the Norton's theorem okay so find the current in the load in figure which is the circuit diagram by using the Norton's theorem okay so एठी voltage source आउ resistance देखो चारिटा दे दीची okay so first हमें कोन करिबा remove करिबा load को load एठी कोन अछि ए जो 10 ohm रो load अछि okay
प्राय सबू एग्जांपल देखिबो राइट साइड रे जो रेजिस्टेंस थिबो सेटा ही लोड रहिबो राइट. So on removing the load and short circuiting the terminals where the load is removed, एबे सर्किट रो रिप्लेसमेंट आमे कर देला लाइक दिस. ए बळे हमरो सर्किट आसी गला लोड को रिमूव कर नीचु. सो एबे करंट ए जो आई दिस विल बी हाउ मच देखो ए 20 ओम रेजिस्टेंस अछि तापरे ए 20 ओम आउ 20 ओम ओके एटारो पैरेलल कॉम्बिनेशन हिची and we are here having a 20 volt voltage source. Okay, so it current equal to this voltage source. Okay, remember this is voltage 20 volt. तापरे this 20 ohm here आउ एठी 20 आउ 20 रो parallel combination. So current आसीगला 20 by 30 which is 0.66 ampere. Okay, now it is divided equally at this point C. Okay, C रे एटा समान भाव रे बांटी ही जिवो. Hence IN जो ए current अछि this will be how much I divided by 2. So 0.66 by 2 which is 0.33 ampere. Now हमरो काम होला आर एन बा नॉर्टन रेजिस्टेंस बाहर करिवार अछि. ओके, सो याकू बाहर करिवा पई लोड को रिमूव करनबा ता सहित वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करनबा. ओके, सो वी आर गेटिंग द फिगर लाइक दिस. ओके, ए बढिया देखो हमें फिगरटा पाइला वोल्टेज सोर्स को भी हटे नेला. सो हमरो काम होला आर एन को पाइबार अछि. ओके, वेरी इजी. एठी फिगर रे देखिले जणा पडुची आर एन केते हबो ए 20 ओम सहित एई दुईटा पैरेलल कॉम्बिनेशन हिची. ओके, आउ एई 20 ओम सहित एटा सीरीज रे अछि. ओके, सो एई हिसाब रे हम लिखि देला आर एन रो वैल्यू पाइला 30 ओम. ओके, नाउ we can apply the Norton's theorem into the Norton's equivalent circuit which is shown in the figure 8.40. okay, so देखो Norton equivalent circuit एटी voltage को हमें current source रे replace करनेला. then we have the load पुणी वापस आनी गला load को आउ Norton resistance which is 30 ohm. okay, so the current in the load resistor that is IL. okay, load resistor माने 10 ohm रो resistance टा याको हमें पाई परिबा IL equal to 0.33 into 30 divided by 30 plus 10. okay, so it is found out to be 0.2475 ampere. okay, अच्छा आको बढ़िबा. let us see an example based on the reciprocity theorem. okay, so a example रे कहूची prove the reciprocity theorem for 1 ohm branch which is shown in the figure. okay, so 1 ohm branch माने एटा एई ब्रांच रे हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करिवार अछि. सो एई फिगर को देखि कि हमें कोन करिबा टोटल करंट इन द सर्किट यदि बाहर करिबा ताले देखो टोटल करंट माने सपोज यार वैल्यू हला आई. सो वोल्टेज सोर्स गोटे ही अछि 36 वोल्ट याको हमें ऊपर लिखिला. तापरे बाकी जेते सब रेजिस्टेंस अछि देखो 3 plus 1 एटी लिखुची 3 plus 1 काहे कि हला बिकॉज़ ए दुई रेजिस्टेंस सीरीज रे अछि. सो 3 plus 1 लिखि देला. ए सीरीज कॉम्बिनेशन पुणी ए 12 सहित पैरेलल रे अछि. ओके, सो या सहित हमें पैरेलल करला ए 12 सहित. देन एतिकी टोटल कॉम्बिनेशन रे जहा रेजिस्टेंस पाइला ओके ताकू हमें ए 2 ओम और 4 ओम सहित सीरीज रे बांधी परिबा. ओके, से हिसाब रे एटा को हमें इक्विवेलेंट सर्किट रिप्लेसमेंट करला बाय द करंट डिवीजन फार्मूला. सो याकू हमें बाहर करबा जदी यार वैल्यू आसीबो 4 एम्पियर. ओके, नाउ करंट IL माने जो लोड करंट इट कैन बी फाउंड आउट बाय द प्रोपोर्शनल करंट फार्मूला जो करंट डिवीजन फार्मूला टा. ओके, आउ as per this the current is inversely proportional to the resistance. okay, so IL is केते 4 into 12 divided by 12 plus 3 plus 1. okay, 4 काहे कि हला ए जो 4 एम्पियर हमें ऊपर पाइला दिस इज द करंट. तापरे एठी 12 माने जो रेजिस्टेंस ओके सिंगल रेजिस्टेंस आ बाकी तीनटा रेजिस्टेंस रो कॉम्बिनेशन. ओके, सो यार वैल्यू आसिला 3 एम्पियर. नाउ we can apply the reciprocity theorem. okay, on replacing the voltage source in the 1 ohm branch we are getting a circuit like this. okay, so देखो 1 ohm branch रे हमें voltage source को एबे replace करनेला like this. okay, आउ एठी हमरो IL dash load resistance ए पटे आसीगला राइट. सो एबे I dash माने ए जो करंट
याकू जदि आम बाहर करवा देख ए कौन हम एबे रेसिप्रोसिटी माने रेसिप्रोकाल जो इंटरचेंज हो गला वोल्टेज एई पटे एबे लोड एई पटे आउ आमे याकू प्राइम रे रिप्लेस कर देला करंट आउ लोड करंट को ओके सो सेही भले आमे कैलकुलेट करले यार वैल्यू आछी 4.5 एम्पियर राइट ताले IL डैश रो वैल्यू केते आछी 3 एम्पियर ऊपर जेमती कैलकुलेट कला नाउ एई दुईटा जाको जो कैलकुलेशन रे माने रेसिप्रोकाल सर्किट करिकी आमे देखिला जे IL आउ IL डैश दुईटा जाको समान ही आछी दैट इज 3 एम्पियर हेंस द रेसिप्रोसिटी थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड ओके अच्छा आकु बढ़िबा at the end let us apply the DC circuit to the maximum power transfer theorem okay so एठी देखो प्रॉब्लम रे कहूची find the value of RL माने जो लोड रेजिस्टेंस अछि for maximum power in the circuit of figure 8.46 ता सहित also find the maximum power कहूची so एठी कोन करिबा हमें maximum power which is delivered when RL equal to R equivalent आमे जानिछु maximum power transfer हिसाब रे RL should be equal to the input resistance माने load resistance should be equal to the input resistance which is also the equivalent resistance and also the Thevenin resistance so here R equivalent याको हमको बाहर करिवार अछि which is obtained by removing the load and short circuiting the voltage source okay load को हटे नेला voltage source को भी हटे नेला बाकी जेते सब resistance रहिले ताकू लिखिदेवा ऑलरेडी आम जाचु ये कॉम्बिनेशन रे टोटल इक्विवेलेंट सर्किट रो रेजिस्टेंस केते आसीबो वी कैन इजीली कैलकुलेट ओके 16.67 ओम आसिला ताले मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड केते बेले व्हेन RL इक्वल टू R इक्विवेलेंट सो निहाती भाबरे लोड रेजिस्टेंस रो वैल्यू 16.67 ओम ही हेबो ओके सो याको एबे हमें रिप्लेस करनेला RL रो वैल्यू हमें जानि गला नाउ फ्रॉम दिस सर्किट वी कैन कैलकुलेट द टोटल करंट which is the ratio of voltage and resistance okay so एठी यार वैल्यूटा आसिला I रो 0.47 एम्पियर तो लोड करंट केते हिजबो I into 20 by 20 plus 26.67 okay which is 0.20 एम्पियर so maximum power जोटा कि लोड रेजिस्टेंस पई हमें देखुतला जदी ओके लोड करंट रो स्क्वायर माने IL स्क्वायर into R okay यार रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करला इट्स वैल्यू इज फाउंड आउट टू बी 0.67 वाट ओके ये हला मैक्सिमम पावर टा नेक्स्ट प्रॉब्लम एठी देखो इन द सर्किट शोन हियर इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस अगेन लोड रेजिस्टेंस रो वैल्यू पचैला व्हिच इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल A and B which would abstract maximum power from the circuit also find the maximum power ठीक जो हमें प्रीवियस प्रॉब्लम टा करला सेही बड़ा ही प्रॉब्लम सो आई एम लिविंग दिस एज ए टास्क फॉर यू ओके सेम जिनस अच्छी एठी राइट अच्छा सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम इनटू द डीसी सर्किट्स ओके तेबे हाँ आ गोटे कथा या सहित मु आ गोटे पीडीएफ मध्य एनक्लोज करिवि व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम इंटरनेट ओके आई थिंक दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल फॉर यू ओके सो ताकू भी तमे पढ़ी की प्रैक्टिस करि परिबो आउ सेथिरे भी डिटेल अछि जो जते सब नेटवर्क थ्योरम रो विषय रे as far as its application to the DC circuits are concerned okay Thank you.